हेलो हेलो। गेम का आवाज़ आ रहा है क्या? गेम का आवाज़ आ रहा है कि दोस्तों? गेम का आवाज़ भाई। ओ भाई, इतनी जल्दी आ गए आप। हेलो रोनिन भाई, कैसे हो? आई एम फर्स्ट। मैं बढ़िया, आप सुनाओ? मैं भी बढ़िया रोनिन भाई। स्वीट वेपन आ रही आवाज़? आ रही आवाज़। ओके ओके, चलो 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर लाइव स्ट्रीम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आई नो मैं लेट हूँ, बाहर गया था मैं, अभी आया मैं और तुरंत बैठा स्ट्रीम पे। देखो मैं बीमार हूँ फिर भी आ गया। दोस्तों लाइक करो, आप जितने भी दोस्त देख रहे हो लाइक करो। बीमार हूँ फिर भी आ गया। और हम लोग लेटेंसी चेंज की है क्या? क्यों, क्या हो गया? थोड़ा सा इश्यू हो रहा है क्या? कल से लोग वही बोल रहे हैं, लेटेंसी लेटेंसी। क्या हो गया? क्या हो गया लेटेंसी को? मैं ना ये फिर से सेट करूंगा, रुक जाओ। एक मिनट रुको।
क्या दिक्कत हो रही है नहीं मालूम रोनिन भाई, कल से हो रहा है। क्या फॉल्ट हो रहा है नहीं मालूम। मैं भी देख रहा था मेरे जो टैब में है ना, थोड़ा सा लेट लेट आ रहा है। कुछ तो दिक्कत है, और वीडियो का भी कुछ तो भी दिक्कत हो गया है क्या। क्या हो रहा है क्या मालूम, शायद अपडेट आ गया होगा, कह नहीं सकते। अपडेट के वजह से मे बी, अपडेट की वजह से में भी हो सकता है, क्योंकि एकदम अचानक से ऐसे क्यों हो रहा है। और लेटेंसी तो वही है, मैंने कुछ किया भी नहीं लेटेंसी के इसमें। लो लेटेंसी रखी है। सुनो ना, थोड़ा सा जल्दी आओ ना, ये करना है अनबॉक्सिंग। थोड़ा सा जल्दी आओ ना। स्पाइडरमैन खेलो ना, स्पाइडरमैन खेलो। चलो स्पाइडरमैन खेलते हैं। जब तक रोनिन भाई आते हैं तब तक स्पाइडरमैन खेलते हैं, चलो। आप बोल रहे हो तो स्पाइडरमैन, कोई इशू नहीं। जल्दी आओ ना रोनिन भाई। मे बी ये वाला खेल सकते हैं, ये वाला ही खेलेंगे, क्योंकि वो जो है वो मैंने स्ट्रीम पे खेल रखा है ना, तो उसके लिए। रुको, सेटिंग्स में जाके ऑडियो, डायरेक्ट नहीं, ये नहीं, म्यूजिक, डायरेक्ट बंद। हाँ अभी खेल सकते हैं, हाँ चलो। प्लीज़ खेलो ना। अरे क्या खेलो, ये देखो। हाँ, हाँ, ये देखो, कर दिए स्टार्ट। ये तो मेरा गो टू गेम है ये, मतलब ऐसे बोर हुआ तो यही गेम स्टार्ट। और इसकी स्ट्रीम हो रखी है दोस्त, इसका बस अभी लास्ट पार्ट रह गया है, वो वेनम को मारने का। वो पार्ट करना है कंप्लीट वैसे। देखो एक, ये देखो, रात 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 रात। बेस्ट कैरेक्टर माइल्स, क्या बात है दोस्त। मेरा भी बेस्ट कैरेक्टर एंड फेमस कैरेक्टर अभी तो फिलहाल ये सबसे पावरफुल है गेम में, सबसे पावरफुल है यही कैरेक्टर। कहाँ पे गए। मर गए, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं। ये ईयरफोन का कुछ इशू है क्या। इसका अल्ट देखने का है क्या वाशु जी, अल्ट देखना है अल्ट। इसका मूवी, हाँ मूवी भी देख लिया मैंने, मूवी भी मस्त है। ये देखो गायब भी होता है देखो। हेलो। हाँ हेलो। और क्या चल रहा है। एकदम बढ़िया, आपकी वजह क्या से मेरे को अनबॉक्सिंग, क्या ईयरफोन। ये सुना मेरी कॉमेंट। करूँ क्या अनबॉक्सिंग। एक तो आपकी वजह से मेरे को सर्दी हो गई, वो देख लो ज़रा डिस्कॉर्ड। अपने मास्क पहन ला क्या, मास्क पहन के आ जाओ। बस भैया पार्ट पहना हुआ मास्क। 1 सिर्फ, माइल्स मोरल्स पार्ट 1। कौन सा पार्ट 1, क्या कह रहे हो दोस्त।
शुरू करने को कह रहा है माइल्स मोराल्स। 2000 दो कर देंगे। अरे खेला है उन्होंने। नहीं 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 नहीं, सिर्फ माइल्स का ना, माइल्स का बोल रहे हो। हाँ कह रहे हैं मैं खेला हूँ भैया पार्ट 1 से माइल्स मोराल्स का। अच्छा अच्छा, माइल्स अभी, माइल्स मत खेलो, सुनो। खेल लिया उन्होंने। आप ये स्पाइडरमैन खेलो, स्पाइडरमैन मस्त है। माइल्स की स्टोरी बोगस है, माइल्स की स्टोरी बोरिंग है। One ton of runaway metal brought to a halt. We'd love to see it. ये कैमरा का कुछ इशू हो गया है क्या मेरे साथ? कैमरा का दिक्कत कैसे दिख रहा है कैमरा? देखो एकदम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ब्लर जब है। मैं स्ट्रीम करता था तब कैसे दिखता था वैसे दिख रहा है कैमरा। ऐसे क्यों? ये तो मेरे को नहीं पता शायद। हाँ ब्राइटनेस कम करो, ब्राइटनेस कम करो। देखो ब्राइटनेस कम कर दिया। मैं किस चीज़ से खेलता हूँ मैं आपको बताता हूँ, कॉन्ट्रास्ट और गैमा। गैमा को तो ज्यादा मत करा करो, नेचुरल नहीं लगता ना फिर वो। देखो अब देखो, हाँ सही लग रहा, सही लग रहा। शायद अपडेट आ गया है, पीसी को अपडेट आ गया है इसके लिए हो रहा है वो। हो सकता। साउंड का इश्यू नहीं ना? साउंड आगे पीछे नहीं हो रहा ना? हाँ सब बढ़िया। मतलब गेम का साउंड? हाँ। हाँ हाँ वो भी बढ़िया है। भाई ये सर्दी की वजह से मेरा एक कान बंद हो गया है मालूम। कान बंद हो गया मतलब कैसे बंद हो गया? सर्दी की वजह से होता है वो मेरा। अच्छा 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 अच्छा। Whoa! They're gonna blow up the whole block. What's up? I'm stopping you today. मार दिया। भाई द स्वीट वेपन, वेलकम टू द स्ट्रीम। कहाँ पे गई स्वीट वेपन? ने डाला था मैसेज? नहीं। हाँ डाला था स्वीट वेपन ने हाँ डाला था। डाला था। ये मारते टाइम ये अभी नया आ गया है। हाँ ये एनिमेशन का बूम वगैरह। ये लो अल्ट। और आ रहे क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। फोकस ऑन स्पाइडरमैन। आ जाओ करो फोकस में। यार इसकी क्या मस्त फाइट है यार, ये माइल्स क्या मारता है यार। हाँ जबरदस्त। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं ये अभी। ठीक क्विट। है। ऑडियो ऑडियो थोड़ी सी फुल बढ़ाओ। पार्ट 1 फ्री में है? पार्ट 1 कौन बोलते हैं भाई फ्री में? सच्ची पार्ट 1 फ्री में है? पता नहीं मेरे को। कल मैंने स्ट्रीम बंद की और नेट गायब। टाइम पे कर दिया अपन फर्स्ट टाइम ऐसे हो गया, फर्स्ट टाइम। नहीं तो स्ट्रीम के टाइम ही ढुस। कल भी गेंशिन चालू नहीं हो रहा था, कुछ तो भी दिक्कत दे रहा था। रीस्टार्ट कर दिया पीएस। पीएस का भी उन्होंने अपडेट पे चेंज कर दिया है सब, देखना है? ये देख लो, ये देखो, ये अभी होम होम स्क्रीन आ गई, इस पे सब दिखाते हैं। हम्म। मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं, देखो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चेंज बैकग्राउंड फ्रॉम गैलरी। ये देखो गेंशिन का बैकग्राउंड।
हाँ, ये तो तुम्हारी ली हुई फोटो ही है। हाँ, वही वही हम्म, अपने मतलब जो हमें अच्छे लगते हैं वो भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और समझ गया मैं। प्ले स्टेशन का भी है, देखो प्ले स्टेशन की भी है इतने सारे। ये 1 2 3 4 एनिमेशन है, और ये जो है ये गेम का है। टंग 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 टंग। हाँ वो तो कमेंट पढ़ना। फ्री मिल जाती है, हाँ मालूम है, फ्री मिल जाती है। कोई आपको बस क्या करना होता है। Hey, it's almost time for the Sub-Zero's festival, right? It's always so lively. ये Wonder क्या what the है? flower carriage is gonna look like this year. क्या? Let's go check it out. ये नया इवेंट स्टार्ट हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ ये इसके लिए लेकिन को तुम्हें क्वेस्ट करने पड़ेंगे बहुत सारे। सुमेरु तक जाना पड़ेगा। फ्री में मिल जाता करना है है। दोस्त, पर वो उसके लिए हमें करना पड़ता है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। है कि नहीं सी रोनित ऑफ भाई? थीव्स। यस, वही करना पड़ता है, लुटेरे बनना पड़ता है हमें। फिर पायरेट्स होने के बाद मिल जाती है ये। ऐसे आप कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, बारबूसा, फिर उसके बाद जैक स्पैरो, कौन सा भी कैरेक्टर ले सकते हो। बस पायरेट्स ऑफ The कैरेबियन world में आपको remains एंट्री करनी constant over the होती है, centuries, उसके बाद आप ले but सकते human life is like the हो। चलो dew गेम at अभी dawn. म्यूट, अभी अनबॉक्सिंग। चलो अनबॉक्सिंग। ये कैसे निकालो अभी? And those this is for 2000, but I got it from Amazon, तो डील चालू थी, तो उसमें 900। ईयरफोन, यस ईयरफोन, स्वीट वेपन जी, ईयरफोन्स। रुक जाओ। ओ, वो तो है प्रो लेवल अनबॉक्सिंग। हाँ, यस, दिस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग दोस्त। ये देखो, टेणे 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 टेणे। वैसे ये जो मैंने ऑर्डर किया ये है EDX प्रो, जो कलर है क्रिस्टल कलर, और नो माइक। जो माइक के है वो थे अराउंड 1000, और विदाउट माइक के कम थे। तो हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। सादर दादा दा, सादर दादा दा, टेढ़े टेढ़े। ये भारी है रे, देखो। अरे बाप रे, सगळं आतलं मटेरियल दिसतंय, अंदर का सामान। ये देखो, राच टाच 5। थैंक ऐसे डैड नहीं दिलाए, तो उनको ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने नहीं दिया ना फिर। चलो पहले हम देखेंगे बक्स के अंदर क्या आता है। एकदम प्रो अनबॉक्स। पहले पहले आता है बक्सा, उसके अंदर कुछ नहीं। फिर आता है पुस्तकें एंड कागज, जिसका कुछ यूज नहीं। फिर उसके बाद आता है ये चिंदी, मराठी में चिंदी कहते हैं हम उसे। ये चिंदी खोलते ही हमें क्या मिलता है देखते हैं। खुल जाओ, हाँ खुल गई, चिंदी खुल गई। चिंदी के अंदर है चिंदी आइटम, जो कान को लगते हैं। दो दो बड़े वाले और दो छोटे वाले। मेरे को तो छोटे वाले ही लगे, क्योंकि कान में छोटे वाले ही बैठते हैं। छोटू सा कान है ना,
चलो इसका भी हो गया काम, ये बॉक्स का भी हो गया, ये साइड में रख दो। अभी आते हैं मेन पार्ट्स। चलो अभी ये है ईयरफोन्स के वायर्स। चलो ये खोलते हैं दोस्तों। वैसे 8 लोग देख रहे हो, लाइक करो। अरे बाप रे, इसकी वायर तो देख लो। अच्छी है, अच्छी है। क्वालिटी अच्छी, क्वालिटी अच्छी, हाँ क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, क्वालिटी अच्छी। जैसे मतलब मूड हुआ तो ऐसे कुछ भी नहीं होगा, एकदम रबर क्वालिटी। क्वालिटी चेक कर रहा हूँ दोस्त, क्वालिटी क्वालिटी चेकिंग ना। अभी लोगों को भी दिखाना चाहिए, अभी उनको लेना है तो ऐसे ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ये देखो, एकदम मजबूत, जबरदस्त। चलो ये तो हो गया। अभी ये देखो, इसके ये ऐसा आता है वाकड़ा, तो ये ऐसे कान में ऐसे रात्स करके जाएंगे, ठीक है। तो अभी उसके पहले ये निकालना पड़ता है, ये वाला एक एक निकालेंगे और फिर लगा देंगे, तुरंत लगा दो। बड़ा ही यूनिक अनबॉक्सिंग देख। देखो ये जो अनबॉक्सिंग है ना, ये अनफिल्टर्ड अनबॉक्सिंग है। और ये जो अनबॉक्सिंग है ना, ये आप देख रहे हो, यही करते हैं लोग ऑलमोस्ट। ये बस दिखावा है, दिखावा। जो बड़े बड़े स्ट्रीमर है ना, वो क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं ये बॉक्स, और वो पीछे लाइटिंग आ रही है, and ये हो रहा है। दिस इज रियल, है कि नहीं रोनन भाई? निघ, हाँ निघाला। आ, निघ। निकल नहीं रहा दोस्त, ये रूठ गया ये हमसे। पुश, पुश। हाँ, आ गया आ गया आ गया। रूठ न जाना। अरे मस्त है रे, बाप रे। अगर आप सामने रहोगे ना तो तुमको पता चलेगा। इतना क्यूट ईयरफोन कधी पाहिलंच नसशील। इतना क्यूट है, देखो अभी ये ब्लर हो रहा है, ये दिख रहा नहीं। इतना मस्त दिख रहा है, ये देखो, एकदम क्रिस्टल क्लीन एंड क्लियर्स। आज ही ये वीडियो को इतना गंदा होना था, क्या हो रहा था क्या मालूम, पागल नहीं तो। आता है राइट एंड लेफ्ट कसं कळणार, अभी राइट और लेफ्ट कैसे समझ में आ जाएगा? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अलग ही है, अभी ये देखना पड़ेगा। ये देखो, ये यहाँ से ऊपर से या नीचे से इसका, मे भी ऊपर से। ये ये यहाँ, ये ऐसा, और ये यहाँ ऐसा, ऐसा कुछ तो भी है, लटकन्स। चलो अभी ये जो नहीं, ये दोस्तों ये लगा देंगे इसको। मतलब ये जो है ना, ये वायर, ये सिर्फ वायर है, और ये अलग आया है दोस्तों, ये पूरा गट्टा, रट्टा। तो ये रट्टा को इसमें से ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे वायर है ना, तो वो ज्वाइन करनी पड़ेगी। बाप रे, वो भी एकदम गोल्ड प्लेटेड वायर है दोस्तों। अरे भाई, अरे हिची बडबड चालली, रुक जाओ, शांत बैठो दीदी। इनएक्टिविटी शोज नो पर्पस। हाँ, शायद गलत हो गया है दोस्तों, मे बी, नहीं मे बी।
रुक जाओ, देखते हैं बढ़िया है कि नहीं। ये यहाँ से जा। ये देखो, ये देखो बाहर आ रहा है। इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। ये देखो, यही चाहिए लाइफ में। अरे देवा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो हेलो। भाई गा, मैंने म्यूट कर दिया, 1 मिनट। क्या हो ये गया? गेम का आवाज म्यूट किया था, ये आप ही म्यूट हो गए। गेम का आवाज आ रहा है आपको? नहीं नहीं। गेम का क्या इशू है, गेम का आवाज ही चले जाता। रुको, जाने दो अभी, ये थोड़ी देर अनबॉक्स यही लगाऊंगा मैं अभी, रुको। ये निकालूंगा अभी, ये दलिंदर कार्ड तो ये बहुत तकलीफ देता है कान को। मैं एक ही कान में रख देता हूँ, जिसकी वजह से आपका भी आवाज़ आ जाएगा। जैसे देखो, अच्छा लगा तो आप भी ऑर्डर कर लो दोस्त। मैं? हाँ हाँ। अरे मेरे हेडफोन्स बढ़िया हैं। नहीं, आप बोल रहे मेरे थे ना पास। ऑर्डर करनी थी तो हाँ एक मैं टाइम। करूंगा तो मैं हेडफोन्स ही करूंगा, नहीं 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 ईयरफोन्स नहीं नहीं। नहीं, एक बार ट्राई करो ना, ईयरफोन्स। मैंने करे हुए हैं पहले बहुत यूज। आई गो, करो ना अपन मेरे लिए। अभी नहीं, बट जब मेरे को जरूरत होगी तब करूंगा। ओके, ठीक ठीक। वैसे मम्मी भी पूछ रही थी कल आप क्यों नहीं थे, आपके अलग अच्छा। फैन हो रहे। थोड़ी दिनों में आप मेरा चैनल टेक ओवर कर लोगे। नहीं तो ना ना, तुम ही संभालो चैनल। यहाँ है ना। अरे चुकीचं का बसतंय? हम्म, कैसे बैठ रहा है ये? ऐसे बैठ रहा है ना, ऐसे। अच्छे लगे क्या ईयरफोन्स? स्वीट वेपन जी, ये ऐसा बैठ रहा है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहाँ से ऑर्डर किया उसकी वहीं से पिक्चर देख लो ना, कैसे फोटोज में पहना हुआ। हाँ वही वही, नहीं इतना हार्ड नहीं है, सोप्पा है। हेलो रैबिट जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। ईयरफोन्स आए हैं, बस वो कान में नहीं जा रहे। रुक जाओ। हाँ, दिमाग तो है मेरे पास, बस थोड़ा सा कम है। तो सरप्राइज क्यों है ये जानने पे कि दिमाग है? अल्लाह, एकदम परफेक्ट है कान के लिए, एक नंबर। ये देखो, एक तो ये दवाई लेने के बाद इतनी गर्मी होती है ना, वो तो है। और फैन लगाने के बाद सर्दी। बस एक दो हफ्ते की बात हो रहा है, फिर कंबल निकालने पड़ेंगे। फिर ये सर्दी का कुछ करना पड़ेगा ना दोस्त, बहुत तकलीफ दे रहा है। एक तो एक कान मेरा बंद हो गया है, एक। रैबिट जी, आपको मालूम है मेरा एक कान बंद हो गया सर्दी की वजह से। रुक जा, मैं है ना ईयरफोन
हाँ ये थोड़ा सा वैसा है, ए जैसे कान कान की वो होती है ना इस मशीन सी। स्वीट वेपन हियरिंग प्लीज, एड। प्लीज, प्लीज गर्म पानी पियो। हाँ वही 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 किया मैंने। रुको मैं ना ईयरफोन निकालता हूँ। रोहन भाई एक दो मिनट। हाँ ये टेस्टिंग्स तुरंत तुरंत लगा देता हूँ ना अभी, तुरंत क्या ही। आइसक्रीम को उबाल के खाओ। बाप रे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ क्या बात है सब आपकी बढ़िया। सुरीली आवाज ये ईयरफोन में आ चुकी है दोस्त। आ रही है बढ़िया आवाज अब। रुक जाओ। क्या? ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। ईयरफोन डालने के लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे स्ट्रीम के पहले। इसमें स्ट्रीम खत्म हो जाएगी। इस करो। ईयरफोन को ना जब भी उतारने का डर लगेगा, हल्का सा भी पीछे हो गए वो खिंच जाएंगे। बाप रे आवाज तो मस्त आ रही है दोस्त। क्लियर आ रही है एकदम। एकदम जबरदस्त। बढ़िया। पहले वाले से बढ़िया है। पहले वाले से तो बहुत बढ़िया है। बस ये गेम का साउंड नहीं आ रहा। रुक जाओ गेम का साउंड। हाँ, करो गेम को भी देखो क्यों नहीं आ रही। अरे 42 मिनट हो गए स्ट्रीम को स्टार्ट हुए हुए और यही हो रहा था। देखो मैं बताऊं, जो ये खांसी जुकाम होता है ना, कोल्ड वगैरह, ये तो चलता रहता है। जो खाना है खाओ, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। सही अगर बता रहा मेरी हूँ। तरह आइसक्रीम All the खा लो। world holds ठीक है dear ठीक is but a है रैबिट जी backdrop of आइसक्रीम खा constant लेता हूँ मैं। motion. आप आइसक्रीम I खाते हो stand क्या? before it, alone and वैसे बहुत वो से unchanging. लोग आइसक्रीम मैंने बोला है, मतलब मैंने सुना है कि वो आइसक्रीम खाते तो हैं। सर्दी हो मैं भी गई ना आइसक्रीम आइसक्रीम। खाता हूँ। हाँ, ठंड में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा ही अलग है, आइसक्रीम पिघलती नहीं है। उल्टस डोका है बाबा। तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा आइसक्रीम उन कंट्रीज में बिकती है जहाँ पे ठंडी होती है, क्योंकि गर्म कंट्रीज जैसे इंडिया, ताइवान, इंडोनेशिया वगैरह, इन सब कंट्रीज में आइसक्रीम बस गर्मी के ओकेजन पे खाई जाती है कि गर्मी हो रही है इसलिए आइसक्रीम खाते हैं। वहाँ के देश में ओकेजन में नहीं खाई जाती, वो ऑल ईयर राउंड खाते हैं। वो तो है पर ये बहुत बड़े हैं। बड़े हैं। हाँ The world remains मैं कान ही constant over the छोटू सा। centuries. But human life is like the dew at dawn, or a bubble rising through water. बाप रे इसका Transitory. डायलॉग इतना मस्त लग रहा है सुनने को। कान की मशीन। रैबिट रैबिट मतलब है क्या? स्वीट वेपन प्लीज। रैबिट जी आपको एक बात कहूँ, मेरे को एक कान से सुना ही नहीं दे रहा, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये ईयरफोन अच्छे की बुरे। रोनन भाई आप कर लो ना, थोड़ा टेस्टिंग कर लो ना, ईयरफोन लाओ ना खुद और थोड़ा टेस्ट करके। टच करके इसका रिटर्न दे दो। इसके इसके मैं पूछ रहा था आपको कि Inactivity serves no आप ले लो। purpose whatsoever. देखो अगर मैं तुम्हारे ऑर्डर भी करता हूँ तुम्हारे तो यहाँ पे भी जल्दी आ तीन जाएगा। नहीं आते, 3-4 दिन लगते हैं। 3-4 दिन, इसको 10 दिन में ना रिटर्न। 10 दिन रिटर्न का होता है हाँ, बट वो भी उसमें भी 3-4 दिन और लगेंगे। कुछ नहीं होता, मंगाओ। बाप रे मस्त लग रहा है। आहा एक नंबर, मस्त साउंड है, मस्त साउंड है, मस्त साउंड है, मस्त बढ़िया। साउंड एकदम जबरदस्त। रुक रुको इसका अल्ट देखता हूँ। इसे लग रहा ही नहीं कि कान में डाले हैं।
Torn to oblivion. क्योंकि उसका वेट कान के ऊपर जा रहा है ना, तो इतना प्रेशर भी नहीं लगेगा। Time for retribution. ये पीछे घंटा चर्च है ना इस गेम के अंदर। ये पीछे घंटा कौन बज रहा है? स्ट्रीम पॉज हो गई लॉल। नहीं, स्ट्रीम तो चल रही है। रुक जाओ, स्ट्रीम नहीं, ये ईयरफोन नहीं, ये गेम गेम गेम। ओह हाँ, पीछे घंटा क्यों? अच्छे वैसे, अच्छे अच्छे दोस्तों, अच्छे। इफ यू वांट यू कैन ऑर्डर वेरी नाइस ईयरफोन्स विच आई हैव गॉट फ्रॉम अमेज़ॉन एंड सेल भी चल रही है, अमेज़ॉन फेस्टिवल सेल। वो क्या है, वो अभी मेंबरशिप मिली है ना, तो अमेज़ॉन की तरफ से ऐसे करना पड़ता है। बस मैंने वो डाला नहीं है स्ट्रीम पे कि You should member- really bring the मैं Knights of हो गया Favonius with you पार्टनर, next time. ऑफिशियल पार्टनर ऑफ अमेज़ॉन। मैंने डाला नहीं है एक्चुअली, मुझे मिली है वो, तो यू कैन चेक इट आउट एंड इफ़ यू लाइक यू कैन यूज़ माई कूपन कोड गॉडनिक 20। जरूर जरूर। 2000 के ईयरफोन 900 में मिल रहे हैं हाँ। कूपन डालने के बाद। देखो 2000 के ईयरफोन 900 में मिल रहे हैं, कूपन डालो, वहाँ पे डालना गॉडनिक गेमिंग, ठीक है? रैबिट जी, स्वीट वेपन जी और अनिल भाई, आप भी यू गाइस कैन चेक इट जरूर, आउट। जरूर। यस, ये देखो ये ईयरफोन्स है, बहुत बढ़िया ईयरफोन है। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं दोस्तों, ये 3 वेरिएंट में ये कटा है, बहुत बढ़िया है। आई विल पर्सनली रिकमेंड यू शुड ट्राई। ये जो कलर है ये क्रिस्टल क्लियर कलर है, उसके बाद ब्लैक कलर आता है और उसके बाद ब्लू कलर, वो बहुत Guess टट्टी we है, can rest a bit. वो बिल्कुल भी नहीं लेने का। ये कलर एक नंबर है, ज़बरदस्त चुम्मा कलर है। देखो ना, सब अंदर का मामला दिखता है ये ईयरफोन से। बिल्कुल, तुम्हारे कान में चींटी कॉकरोच कुछ भी जा रहा होगा, इससे पता चल जाएगा। ऐसा लग रहा है ईयरफोन्स कॉकरोच। ये देखो ना रैबिट जी, ये देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, देखो अंदर का सब दिख रहा है। देखो स्वीट वेपन जी, रोनिन भाई, इतना मस्त ईयरफोन कभी देखा है आपने? एंड दिस इज वेरी नाइस ईयरफोन्स दोस्तों, यू कैन रियली चेक इट आउट। मुझे लग I रहा है still मेरे have से, a lot to do with the guild. How about you take a rest मुझे while लग I रहा है go ये back? ईयरफोन अच्छा है, पर मेरे कान है ना बंद पड़ गए, इसलिए मेरे कान अच्छे नहीं लग रहे। एक हफ्ते बाद दोबारा टेस्ट करना। हाँ ठीक है, एक हफ्ते बाद फिर से टेस्ट कर लेंगे। और म्यूजिक चलाना कोई अच्छा सा, मतलब खुद अपने लिए। हाँ हाँ, कान के अंदर का जीजा तक नजर आएगा इस काम कर रहे हैं कि नहीं। देखो कान की मशीन बोलो ही मत, स्वीट वेपन प्लीज, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अरे रिलैक्स लग रहा है यार, ये शपथ इतने रिलैक्स, ये इतने बद्दड़ थे ये कॉस्मिक बाइट के, इतना मतलब कान। इससे तो मैं 12 तास स्ट्रीम कर सकता हूँ, 12 घंटे स्ट्रीम कर सकता हूँ दोस्त एकदम। चलो आज रात यही होगा। आज नहीं, आज की नहीं बात कर रहा, लेकिन आज सच। शांत बैठो स्वीट वेपन, प्लीज डोंट। अमेज़न वालों ने एक तो पहली बार, शांत बैठो वरना कूपन नील मिलेगा। एक तो अमेज़न ने फर्स्ट टाइम ये कर दिए पार्टनरशिप। चलो हमें क्या करना था, हमें करना था, क्या करना था? क्वेस्ट, वो भी बेचारे गरीब का स्टोरी क्वेस्ट करना था। गरीब गरीब का नहीं, यलान का कर लो। आई, गरीब का करने दो ना। चलो कर लो, इसका कर लो। गरीब का मेरे को अच्छा ऐसा लगा। करेंगे फिर सैटरडे संडे हम फिर यलान को लगा करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है।
क्योंकि ये गरीब की स्टोरी मेरे को अच्छी लगी। मतलब डीलुक के ये बाद, वाला तो और भी अच्छा है। डीलुक के बाद ऐसी टचिंग स्टोरी जो थी ना, ये इसकी मेरे को लगी। ऐसे डीलुक की भी अच्छी है हाँ। उसकी और स्टोरी करने को है। ये था का डीलुक। नहीं नहीं, उसकी नहीं है कोई और। आई ग बेचारा रे, उसकी स्टोरी होनी चाहिए थी दोस्त। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। रुक जाओ, फिर मार खाओगे तो मैं थोड़ा सा। कुछ ना बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी। यार आपका आवाज इतना क्रिप्स क्रिप्स आ रहा है, क्रिप्स। क्रिप्सी। यस, क्रिप्स आवाज आ रहा है, क्रिप्स। मस्त है रे ईयरफोन, अच्छे लगे मेरे को। सुनाई नहीं दे रहा पर अच्छे लगे। ये कान से ना एकदम कम सुनाई दे रहा। मार खाऊंगा पर ये है ना, गरीब वाला है ना, ये कर देगा ना मदद, ये नहीं करेगा। 1 घंटा ये तो जो इस। स्टोरी है ना, ये हाँ। बहुत अच्छी है। मैं कह रहा हूँ इस पे फोकस करना, कमेंट कम पढ़ लेना भले। कमेंट कमेंट पे ध्यान फिर Hi, आप दे दो। Catherine. It's us. हाँ, Any new कुछ नहीं होगा। commissions? कमेंट आप पढ़ना, एक भी कमेंट मत छोड़ दो। ये तो तुम्हारे लिए है, चलो पढ़ लो। अब वो भी हो गया है। As a मेरे को matter of टेस्ट ही नहीं आ रहा fact, कुछ। there's one that looks perfect for you two. Uncle टेस्ट ही Dai नहीं आ is रहा। one of the foremen at हुआ था ना Huishan start, Hall over हाँ, हाँ, हाँ। Liyue तो Harbor. He's hoping the 2021 में Adventurers मेरे Guild को can spare some खांसी manpower. जुकाम बुखार चढ़ा था। What is it we have to do ठीक है, घर पे exactly? बनी थी पाव भाजी। आई गॉड, I ठीक है, believe you'll be सुनो looking for सुनो, ठीक है, workers. पाव भाजी कुछ बनाई भी थी। टेस्ट नहीं। Looking for people? मेरे को Awesome. कुछ We're टेस्ट नहीं आ good at रहा। that. आई मैं सोच में पड़ा हुआ। I मैंने have मम्मी no को, reason to मम्मा doubt your हरी मिर्चें abilities. लाओ। मैं 4 हरी मिर्चें खा गया पाव भाजी के साथ, मेरे को मिर्च ही ना लगे। I'm sure the बाप details can be रे। worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle और उस टाइम Dai. तो माहौल पता ही है क्या डरा डरा सा हाँ, था, वहाँ पे तो है ना। क्या ही था वो तो एकदम अलग ही था। वैसे तब अगर स्ट्रीम की होती ना, तो अभी इतने मस्त सब्सक्राइबर होते ना। हाँ ये तो है, बंदे वेल्ले बैठे हुए थे। हाँ, और उस टाइम पे ही आया था ना गेंशन, एकदम ताज़ा तवाना। हाँ हाँ हाँ, तब तो बहुत प्लेयर्स थे तो इसमें, बहुत ही ज्यादा। वैसे इंडियन स्ट्रीमर ऐसे थे ही नहीं, मतलब है हाँ, पर बिल्कुल भी नहीं। इतने इतने नहीं थे। तो वो भी नए हाँ गेम उनको देख के बोलेंगे ना, अरे मतलब ज़्यादा पब्लिक आती उस टाइम। देखो कौन से ज़्यादा चला, अमंग अस चला, फिर उसके बाद पबजी, और उसके बाद कौन सा गेम चला, और एक कौन सा तो भी था, बहुत फेमस हो गया वो। फोर्टनाइट। फोर्टनाइट है, फोर्टनाइट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने तो कोला पिया था, ऐसे लग रहा था पानी पी। बाप रे। हाँ, नहीं होता है, आता होता था है, कोई टेस्ट। होता है। अभी टेस्ट ही नहीं आता तो क्या ही Uncle करें। Dai. I am indeed. बहुत रिलैक्स लग रहा है Now दोस्त, then, भाई you must शपथ be the इतना रिलैक्स adventurers में assigned कभी by नहीं the हुआ। guild. Huh? How could you tell? बस ये थोड़े से By ना the clothes on your संभल back and the look on के your face. यूज करने पड़ेगी, Experienced क्योंकि देखो ना adventurers at ऐसे that, I'll इधर wager. उधर हुआ तो ताड़ Right ताड़ again. टूटने के You're pretty चांसेस। perceptive. हाँ हाँ, वो तो है। वही आपने In बोला, this वही trade, आपने और you कान need में a उल्टा sharp eye दर्द for करेगा। people, हाँ, वो not just rocks. एक्चुअली अटक Uncle जाते Dai हैं ना can कान see में, what ये you're तो made भी of ऐसे from a long निकल way जाते थे off. पहले, थोड़ा दूर हो गया तो हाँ, ये तो अटक जाते कान में। All right, my assistant should be arriving soon, so let's उठने just से wait here पहले a moment. याद रखना कि इसको भी हटाना है। That's why we're here. अभी Now उसकी there's आदत someone डालनी else पड़ेगी taking the अलग। cut. पर ये Well, जो to tell you गोल्ड the कलर का, ये truth, this प्योर is a गोल्ड है very क्या? difficult matter. नहीं नहीं, Too much for गोल्ड नहीं adventurers होता है alone ये, to handle, I think. कॉपर होता है, हाँ, कॉपर या ब्रास। यस यस, So there कॉपर is कॉपर someone कॉपर। else.
back to the job. रुको, ये स्ट्रीम होने के बाद इसकी डिटेल चेक करेंगे। लोग लेने से पहले डिटेल देखते हैं, हम स्ट्रीम के बाद लेने के बाद डिटेल करेंगे। क्या रहता है इसमें? चल। It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts वैसे in ये ore कितना appraisal टाइम or का है? geological analysis. With a professional by नहीं your है, जितना side, पहले everything वाला should था। run मतलब smoothly. एक आधा Besides, घंटा? 15 this मिनट guy's the आगे best in his बस। field. No matter the rock, पहले he'll वाला tell आधे you घंटे its का value थोड़ी to था, the वो तो 1 nearest घंटे का more था। at a अच्छा अच्छा, glance. ठीक। नहीं, I'd आज go as far to say शॉर्ट that there's स्ट्रीम not ही a करते soul हैं, to vet that बॉडी को knows rock's तकलीफ better नहीं than देते him. हैं। I'd be a हाँ, ये fool not to शॉर्ट ही listen है, to an ज़्यादा expert of वो his दिक्कत caliber. नहीं है इसमें। You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. पहले कैसे होता था, मैं आपको बताता हूँ। Oh, स्ट्रीम की and why स्टार्ट might that में, be? जब मतलब एकदम स्टार्ट स्ट्रीम, तब मुझे ऐसे होता था कि मैं स्ट्रीम कब खत्म करूँ या कब ऐसे गेम स्टार्ट करके लोगों से बात करूँ। अभी मैं कुछ भी, मतलब ऐसे टॉपिक भी नहीं, मैं 1 घंटा कुछ भी बात कर सकता हूँ। हो जाता है ना धीरे धीरे से। हैबिचुअल हो जाता है। यस। Haha! Didn't expect that, did you? और अभी 1 साल हो गया ना? We'll go fetch him. हाँ, हो गया। हो गया 1 साल हो गया। आप ही मिले थे ऐसे, That's Zhang Li is ऐसी listening to the storyteller. समय में आप इसी मिले थे। टाइम के अराउंड। हाँ, यस, करेक्ट। मैं अकेला था, ये खेल रहा था पैज़्मो। नहीं अकेले नहीं थे, विराज भी था शायद। नहीं, तब नहीं था विराज, तब नहीं था, नहीं तब था। मैं अकेला ही था। विराज बाद में आ गया, तो मैंने विराज को बोल दिया कि ये एक दोस्त है। वो था, पर वो सिर्फ डिस्कॉर्ड पे था, मैं अकेला ही खेल रहा हाँ, था। ऐसा था। हाँ, तो मैंने आपका नाम देखा, तो मुझे लगा कि कोई बाहर का ही है, और आपकी इंग्लिश तो इतनी ज़बरदस्त। जब आप चैट पे आ गए तब मुझे पता चला। चैट पे मतलब? चैट, यूट्यूब के चैट पे आ गए थे तब आप देखो। हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने जब सब्सक्राइब, वो तुम्हारे यूजर नेम के आगे वाईटी लिखा होता था ना, हाँ, तो मैंने ऐसे ही सर्च किया था, तुम्हारा नाम तो मिला। अच्छा। क्या क्या? गॉडनिक गेमिंग। पहले मैंने गॉडनिक वाईटी सर्च करा था, नहीं आया। फिर मैंने कहा कोई गेम खेल रहा, कोई गेमिंग लगा के बैठा होगा। तो मैंने गेमिंग सर्च करा, फिर आया। अच्छा, मतलब ये नाम आपको कैसे लगता है? गॉडनिक गेमिंग ठीक है या गॉडनिक वाईटी ठीक है? नहीं, गेमिंग ज्यादा बेहतर है। वाईटी क्या, यूट्यूब पे तो स्ट्रीम ही कर रहे हो। वो अगर जब तुम गेम खेलते हो तब वाईटी रखो। ओके ओके ओके। भाई देवी, ये बंदा किधर है? अरे ये का ही तो असला है। In our last tale, Rex Lapis. Zhang Li, there you are. दिखाई नहीं। Oh, इसका ये फेवरेट Here for a होटल few लग रहा है, tales. यही आता है I बेचारा didn't know खाने you को। two were connoisseurs. हाँ, अच्छा फोकस करना। भाई देवी सुनो ना, यहाँ पे पैसे कौन देता है? यही देता। Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted Tevat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no. It's just Uncle Dai doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise,
I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, young Lee. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. स्क्रीन के ज्यादा पास आ गया क्या? नहीं एकदम सही है। हाँ थोड़े से बड़े लग रहे हो बट अच्छा है, ठीक लग रहा है। All the world holds रुको dear एक सेकंड, is ये but a backdrop of constant थोड़ा सा motion. छोटा कर दे दो ना फिर मैं। I stand before it, alone and बट ठीक लग रहा है, unchanging. क्यों छोटा करना? सही लग रहा है। नहीं यही मैं अभी देख रहा था, फोन पे कुछ ज्यादा ही पास जैसे लग रहा है। ये ऐसा कर लूँ तो आप देखो। Listen, let me tell you how it is. ये चमचम चमचम भी हो रहा है एक। Listen, let me tell you how it is. अब देखो। Listen, let me tell you how. अरे यार ये चमचम का क्या है? ये क्यों ऐसे हो रहा है आज? कल भी हो रहा था मालूम, कल आप नहीं थे तो। Inactivity serves no purpose whatsoever. वो भी आपसे नाराज हो गया शायद, आप नहीं थे तो। Listen, let me tell you how it is. ये ऑर्डर ठीक है, और ये थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। नीचे हो गए। All the world holds dear is but a backdrop of constant motion. I stand before it, alone and unchanging. Listen, मेरे को ऐसे आगे ही लग रहा है यार आज। ठीक है यार, कुछ तो सही भी- है, कोई कुछ तो भी दिक्कत नहीं है। अजीब अजीब लग रहा है आज। नहीं क्या हो गया क्या मालूम। जाने तो बाद में कर देते हैं उसको, अभी ये फोकस कर देते हैं यहाँ पे। एक तो ये कान का प्रॉब्लम हो गया। साइड से गाड़ी पॉ पॉ करेगी, मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा। ठोक के चला जाएगा पागल बेवड़े, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये एक बार मुझे स्कूल में भी हो गया था ठंडी की वजह से। ठंडी मतलब सर्दी। ऐसे क्यों होता है क्या मालूम? अंकल से बात करनी। अंकल Uncle Dai, we're back! oh, and this must be the friend you spoke of? Yep, Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still,
I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here, then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kunjun. Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... मे बी कुर्सी को मैंने थोड़ा सा आगे ले लिया है. Longsheng Funeral Parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? So that's what we plan. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... never mind. Zhongli won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Kunjun. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I अरे was थोड़ा standing ठीक by the लग side रहा of the है, कोई road one जान. day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly उसके excited, wires even कपड़ों से भी followed me match for a कर रहे हैं। while. क्या? We arranged to meet here. उसकी वायर्स कपड़ों से भी मैच कर How रही could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue अरे हाँ Harbor, रे, pouring over rocks and muttering to मैंने भी आगे himself. देखा. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. इसकी वायर तो नहीं ना टूट जाएगी You have a poor दोस्त. memory. क्यों टूटेगी? मतलब Not देखो, exactly. Anyway, if it's ये rocks you need रबर help with, के I can मतलब most ये certainly वायर lend जो a है वो hand. रबर के अंदर Mr. वो डायरेक्ट Zhongli, ओपन है What do you make of this rock? वो कॉपर का. कैसा A लाइट गिनी? glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. नहीं मेरे को नहीं लगता If ऐसा I'm not mistaken, मतलब this is a क्वालिटी rough अच्छी है ना, gem आपको from क्या another लग रहा है? nation. Ah, देखो, a keen नहीं eye. आपने नहीं बोला ना तो भी चलेगा दोस्त. It's no ordinary Honest rock. review दे डिस्कॉर्ड दो. पे बाद में फोटो सेंड कर Fragile देना surface ठीक है, layer, ठीक है. कैसे black हाँ vein. हाँ हाँ दूर है। चलेगा चलेगा My चलेगा. हाँ intuition करेक्ट. tells ये me आपको that पता there's नहीं high चलेगा ना. quality ठीक है, ठीक crystal ore है. सेंड inside. कर दूंगा मैं. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own 2 eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. Ronin bhai, I think the old book I've has yet a to new chapter. encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli.
How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. अच्छा, इसका जो बास है ना वो थोड़ा सा कम है, हाँ? बास या बेस क्या कहते हो आप? बेस बेबी को बेस पसंद है। पर बास भी ठीक है ना, मतलब बास नहीं भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बेस का क्या करोगे, पता है ईयर्स को डैमेज करता है बेस। वो भी है। वो जो था ना कॉस्मिक वाइट, उसका बहुत था। मेरे पास ब्लूटूथ वाले हैं OnePlus के, हाँ उसका भी बेस बहुत है, बट मैं कभी उसको इतना यूज नहीं करता कि बेस उसका दुम 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 करके बजे, कान फाड़ देता वो हाँ, तो इसका ये वाइब्रेट होता है भाई। इसका ये कम है, इसका कुछ ज्यादा ही कम अच्छी है। बात है, अच्छी बात है, कोई नहीं। बट इसकी जो क्वालिटी है कि ना सब वॉइस वगैरह की, वो बहुत अच्छी है कि आपकी आवाज तो इतनी प्यारी आ रही है, बास क्या ही बोलूं। सही है। मटेरियल तो अच्छा है, अच्छा है। फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। पता है क्या है, इसका जो मटेरियल है ना, हाँ वो उन्होंने ट्रांसपेरेंट रबड़ यूज करा है बस। नॉर्मल वाले प्लास्टिक का जो डार्क कलर का रबड़ आता है वो यूज करते हैं, कुछ फर्क है नहीं इसमें, अच्छा। सेम मटेरियल है। ओ, अंदर की जो तुमको वायर दिख रही है वो कॉपर की, वो तो सब में होती है। तुम कभी ईयरफोन के वायर काटना तुम्हें दिख जाएगी, ठीक ठीक, सब में होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल भी। हाँ, मतलब दोस्तों कुछ दिक्कत की बात नहीं है, कान की मशीन एकदम बेस्ट है। वैसे ही दिख रही है कान की मशीन। Shine down. अरे बाप रे, ये होल्ड करने के बाद ज्यादा डैमेज होता है? वनिन भाई ये मुझे हाँ, मालूम नहीं हाँ। था, मैं बस होल्ड करके निकाल तो देता था। There is no escape. होल्ड वाले को चार्ज्ड डैमेज इसलिए तो कहते हैं, उसमें ज्यादा डैमेज होती है। और बाप रे, आवाज तो एकदम जब्बर है, मतलब राइट को जाने के बाद एकदम राइट का। वाह, यही चाहिए था, यही चाहिए था। यस। Whoa, this mine is huge. This is where the incident occurred. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. वो पीछे भी I worked आवाज with आ all रही of है them. उनकी। Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Underground, overground, we left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself.
how could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. सुनो ना, So strange. How could the four of them just suddenly disappear? हेलो Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. हेलो हेलो, आवाज आ रही है? अय्या, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एक सेकेंड, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। आ रही है। हेलो हेलो, हाँ हेलो हेलो। हाँ क्या हुआ था? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, स्ट्रीम पे आ रही थी शायद, पर वहाँ पे नहीं आ रही थी। वैसे ये देखो ना, यहाँ पे फॉर्मेट पे, मतलब पीसी के इस पे आउटपुट सेटिंग पे फॉर्मेट पे है 2 चैनल्स 24 बिट 48,000 हर्ट्स। तो वहाँ पे 96,000 भी है और 192,000 भी है। तो किसको रोको? जो डिफॉल्ट है वही रख दूँ या बढ़ाऊँ, कम The करूँ? world remains constant over the centuries, but human Default life is रखो। like the dew at dawn, or a bubble कान लगा rising तेरे through को, सब water. हो जाओ दे। हाँ, डिफॉल्ट ही रखते हैं, कान को कुछ हो जाएगा। जा, वही वही। आपको पीछे आवाज आ रही है? वो जो नाच रहा है वो बारीक सी आवाज आ रही है। गेम में नहीं। ये हाँ आ रही ये है आ रही है आ रही है ये आ रही देखो, है, आ एकदम रही है। एकदम बारीक आवाज आ रही है। देखो, आपको तो एकदम डिटेल में आवाज हाँ, आ आती रही होगी, है ना? आपका तो हेडफोन है। अरे सीरी Over क्यों स्टार्ट हो गया? सीरी What's this? A pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. 1, 2, 3, 4. Huh. That seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? 1, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. If they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. अंकल गायब हो गए। अंकल Kunjun, what do you have there? Oh, right on time. Did you find anything?
There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. ना ये गेम को कितने डायलॉग है तो उन लोगों को कितना मतलब बड़बड़ बड़बड़ करना होगा ना डिटेल भी तो डालते हैं अपनी फिर। है ना Looks like he's concentrating और really बस hard. ये What's he up to? स्टोरी क्वेस्ट I नहीं see. अगर अलग अलग भी और ऊपर से वो Four कैरेक्टर को भी men. अलग उनकी स्टोरी Following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. अच्छा I can इसको भी दिखते हैं मतलब perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. ये Based on what I इंसानों saw, की इसको क्यों दिखता I है believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. देखो ना स्टोरी पे फोकस करो। अच्छा ठीक North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. Found some clues. Time to report back to Uncle Dai. ये क्या भाग रहा है बे? पकड़ You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. Forced to? But who would kidnap miners?
Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. Could someone have entered the site and simply walked away with him? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of his, expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come up with anything. In the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. So, अरे they're gonna irritate कर talk रहा to है the इसका people over आवाज. at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the इसकी mine. आवाज की पिच Shouldn't हाई we है go ना इसलिए. north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? Oh yeah, where's Kunjun? Paimon and Betsy's still investigating. Let's go find him. रुको पहले इसको मारता हूँ. मेरा तो इरिटेट कर दिया. किधर गया ये पागल का बच्चा? किधर है वो? इधर क्या बे? बाप रे बहुत लोग हैं. नो कैंसल. अच्छी इसकी आवाज़, अच्छी इसकी आवाज़, जाने दो. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall? Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious, as if there's something I've forgotten to finish. It's an unpleasant sensation. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what it is. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhengli. You're too kind.
Think nothing of it. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great! Let's have a look. क्या? कौन? कहाँ पे? क्या हुआ, क्या बोल रहा हूँ? ये झगड़े किधर चालू हो गए? हैं? कोई तो नहीं। ये एक बात बताओ, झगड़े डेंजर वाले होने वाले हैं क्या? अरे यार खेलो, इतना कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, मतलब खाना लेने के लिए। हाँ, नहीं, आगे जाके इजी हो जाएगा। Wait, there are tracks here. These must have been left by the miners. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead. मेरे को अच्छे लग रहे हैं ईयरफोन्स। खुश हो रहा हूँ मैं बहुत। अच्छे तो है। One with nature. ऐसे लग रहा भी नहीं मैंने पहने, एकदम रिलैक्स। आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ उसकी वजह से। आप भी ले लो गेम। इसको मारना है क्या? Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Oh no, the footprints end here. We should inquire with anyone nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Hi there, have you seen anyone dressed like a miner around here? A miner? I'm afraid not. Let's try someone else. चाचा कोई याद नहीं।
चाचे के दिन Hello, have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Jeez, a इसको little तो मैं grumpy, मारूंगा aren't we? क्लाउड वॉचिंग मतलब क्या Whatever. Let's go ask someone else. काम तो कार्टून कर देख रहा रहा नहीं है वो? कुछ पागल नहीं तो मैंने क्लाउड वॉचिंग अरे देवा Illusion shattered. Wind strike. Time to go. Looks like I went too far. पावरफुल हो गया मेरा बंदा Hey there! Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Yeah, that's them! 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them! More footprints. There's a person over there. Help! Please save me! Is that one of the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. Time to go. Fallen leaves. Adorn my night! Come on, we can do it. स्विच हो गया Wind strike. There is no escape! Inazuma shines eternal! Remove all... As one with wind and cloud. Those monsters were so aggressive. They must have noticed me walking through. Before I knew it, they were all over me. Thank you all for saving me. My name is Wanyu. I belong to Liyue's Shengyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment.
I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. बहुत I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all for your help. According to this scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Aha! Paimon nearly forgot about our secret weapon! It looks promising. I'll do my best. चलो इसको क्या रीजन दिखती है देखते हैं। It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise from Mr. Zhongli is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Be that as it may, we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night, over hills and mountains, led by a child. This is no ordinary incident. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we should be able to catch up with them. Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking! A classic Zhongli move! इसके साथ उन्होंने कुछ देना चाहिए था, बैग वगैरह। अब सो तो नहीं गए? नहीं देख रहा हूँ स्ट्रीम। अच्छा। Hey! Over here on the ground! Is this one of the missing people? There's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey! Hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. ठीक है। It seems that he thinks he still has work to do. Something's not right. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move.
How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Paimon's had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current circumstances. But thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. I'm going to scan the surroundings. Perhaps there are more memories to uncover. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. However, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Paimon doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself, it's... Ulterior motives? Is he a villain?
A conclusion that is presently impossible to reach. We must watch and wait. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation ahead. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does find the camp, he'll know what to do. ये सोच के वहां गए कि भाइयों ने वो लिया। यस कह नहीं सकते ना। ये देखो आ गए, ये देखो पीछे। ये तो ऐਵੇਂ ही है, ये थोड़ी है, बच्चे हैं। ये देखो और आ गए। Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? वो There देखो are पीछे। many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Wow. Such an immense tree. मस्त है And पेड़ ये there's so सच्ची। many mysterious looking crystals up there too. Amazing. This ancient tree. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. Perhaps you could survey this section. All right then. Kunjun, can you see anything worth investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh. Time for dishum dishum. This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. अवघडे Not... अभी wish me a luck, If Rabbit you जी. don't try. Oh, When has Paimon ever come up with a... Wait a minute. Paimon can fly. All right, Paimon will go. You wait here. Paimon will... All of you, come here. Huh?
बोलने दो Charlie's बेचारों को। voice came from. But quick, let's इनकी go. दोनों की बात हो, मैंने मेरी बात सुनी। अपना बंदा किधर है? गरीब बंदा, where are you? गरीब बंदे, हाँ। This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare Unusual yourselves presence. and tread lightly. Prepare yourselves. आज मेरे आर्टिफैक्ट लक्ट मस्त था, 3 आर्टिफैक्ट मिले मस्त। क्या कोबरा जी आई शपथ। हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम दोस्त। क्या हाल चाल भाई? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अभी तो बस स्टोरी कर रहे हैं, इसकी स्टोरी मेरे को अच्छी लग रही है, इसके लिए ये स्टोरी कर रहा था मैं। आप बताओ, आपका कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? कल तो आप थोड़ा सा नाराज लग रहे थे, वो जो गेम खेल रहे थे, कोई तो I'm भी afraid हैकर that आया this था। whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. कट सीन देखा, मस्त है। फोरेक्स मला विसरला। अरे अजिबात नाही, तूच उशीर आला बाबा। मेरा भी Digging a बढ़िया। tunnel to this ancient क्या बात? signal. देखो। हाँ हाँ, Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate. एक मिनट रुको, कोबरा जी एक मिनट। बस आता फाइट आहे। ओके ओके, भाई शपथ घुस गए। उस गेम में हैकर मेरे को नहीं लगना इतना बड़ा कोई रहता है। जॉम्बी की शील्ड यूज करो। How to hold करना था। So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ishtar, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. और क्या कर रहा है? मार भी दोगे, उसके बाद भी फोकस करके रखना। रुक जाओ चैट, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा होल्ड करो। Solidified. Shine down. Stabilize. Vision. Wind strike. मर जा साले। Sands know not the mountain. इतना वाइब्रेट हो रहा है ये किधर गया? साले किधर भी घुसता है। तुम तो आ ना। Will not absolve you. Gather. ये क्या दन करता है बे? This is order. Is once not enough? You would forsake me again?
अरे गया यार, जमीन के अंदर गया, If that जमीन is के what अंदर you गया। choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory हाँ is होल्ड करके destined मार to रहा हूँ shoulder कोबरा the जी, burden of वही truth, as it वही ought कर to रहा हूँ। be. कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस भाग रहा हूँ मैं। Solidify! Free crust! Now you shall perish! There is no escape! इजी बॉस। रुक जाओ चैट, थोड़ा 2 मिनट दे दो बस। The enraged earth will not absolve you! अरे डॉज क्यों करना है? उसकी शील्ड तो है ना, डॉज क्यों करना है? Crumble! डॉज करने की जरूरत। Lorax! You think you can destroy me? Yes, I can destroy you because you are not the hero. अटक गया। Crumble! ये क्या कह रहा है? शील्ड पे ज्यादा भरोसा मत करो। Solidify! बारबरा की हीलिंग भी देते रहना। Let the show begin. Quake! Fisher! I will have order. Crumble! The enraged earth will not absolve you! Quake! और ये धाड़ जब होता है ना तो बहुत डेंजर वाइब्रेट होता है। Stabilize! Verdict is Illusion shattered! gather! Crumble! Torn to oblivion! There is no escape! There is no atonement! मर जा साले। Order guide you! मर गया दोस्त। काम 25। That was easy boy। अब फोकस करना भी स्टोरी हुआ है इसकी। अच्छा After you sealed me under मर गया, यस मर गया, कोबरा जी मर गया। turn for the second time. उसकी शील्ड थी ना, उसके लिए। यस नाइस, थैंक यू जी। You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage बच्चे the के अंदर wilderness. से आवाज आ रही है क्या? No. You have forgotten. That voice. Ajdaha. Huh? Kunjun? Morax. It's been a while. You're... Ajdaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree.
Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. रुको जरा चैट रुको कोबरा जी मोरेक जी रैबिट जी रुको दो मिनट रुको स्टोरी बस खत्म होने दो फिर बात करूंगा 2 मिनट रुको बस So there are 2 Ashdahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. रुक जाओ दोस्तों मैं चैट पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा
स्टोर पे देने दो। Morak shared with us some of his हाँ power हाँ, आप to अपना prevent कंटिन्यू करो, further मैं स्टोरी erosion, पे ध्यान देता हूँ। but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. और बाप रे, And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise Oh. between Ajdaha मतलब इसका फाइनल and कॉन्ट्रैक्ट यही है Morax. क्या? You can hate me, but you cannot deny me. ये बोल रहा था इसका कुछ No. कॉन्ट्रैक्ट है। No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an मैं insect कुछ in मैं कुछ turn. पढ़ रहा ही नहीं, चैट में कुछ पढ़ रहा ही नहीं, You बहुत से forgot स्पॉइलर आने yourself. वाले मेरे को मालूम है। Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. मैं वो चैट देखूंगा ही नहीं बाबा, powers जाने under दो। heaven बहुत सी rise बातें and आपने कही है, fall वो of मेरे सिर land के and ऊपर से sea. गई, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो, कोबरा जी कंटिन्यू करो, कोई बात A नहीं। sun ascends as bright as... हाँ मैं नहीं पढ़ रहा नहीं, मैं चैट, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो स्टोरी। Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. मैं नहीं पढ़ रहा, चैट देखो, चैट नहीं पढ़ रहा। More axe! कहाँ पे गया? The little girl vanished. Are you satisfied, Ajdaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ajdaha. This, I will remember this. Your power is nearly spent. Ah, perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Yes, चलो। Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake.
Straight down to business as always. Let's go. हो गया। अभी कट सीन आएगा एक, उसमें उसका रियल रूप दिख जाएगा। हाँ वही मैंने। अभी बोलो कोबरा जी, अभी बोलो रैबिट जी, अभी बोलो मोरेक्स जी, क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? वैसे जो अभी आए हैं कोबरा जी और मोरेक्स जी, ये देखो नया वाला मैंने ईयरफोन लाया है। इन केस इफ यू वांट यू कैन यूज़ माय कोड फ्रॉम अमेज़ॉन, यू विल गेट 20% ऑफ। 20 नहीं, ज़्यादा भी मिल सकता है वैसे, अगर इफ़ यू आर लकी, यू नेवर नो। जो ईयरफोन है उनका नाम है EDX Pro, तो मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो ये जो है ये विदाउट माइक आपको जा रहे हैं 900 और विद माइक आपको जा रहे हैं 1000। इनका एक्चुअल जो है आईफोन लूँगा तो भी चलेगा। नहीं आईफोन के लिए नहीं, इतने जल्दी नहीं, आईफोन के लिए नहीं। ये जो ईयरफोन है उसी के लिए अभी आए हैं फ़िलहाल। आईफोन के लिए आ जाएंगे थोड़े दिन। आईफोन वालों Guess we can rest a bit. चलो, ये देखो आपका यूज़ कर रहा हूँ मैं, दे दो चलो, ऑफर दे दो चलो जल्दी। मतलब अच्छा यूज़ है इसका। मैंने अभी ही ऑन स्ट्रीम इसकी अनबॉक्सिंग करी है, मस्त है। देखो ये देखो ऐसे, ये देखो ऐसे है ये, और ये यहाँ से डालने के, और यहाँ से यहाँ से पैक रात्स एकदम रिलैक्स। मतलब ऐसे लगता भी नहीं मैंने पहना हुआ है। जो मेरे जो पुराने थे वो बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। ये देखो एक रट्टा, इतना जाड़ा, मेरे बेचारे कान दुख रहे थे, रोज़ मेरे कान दुख रहे थे इसकी वजह से। तो अभी ये जो ये एकदम मस्त है। ये इसका एक फ़ायदा है, ये भी ऐसे निकाल सकते हैं हम। ये देखो I still have a lot to do with ऐसे the निकाल guild. सकते हैं, How about you take a rest while I go ऐसे back? निकाल सकते हैं, और ये इसमें से डाल भी सकते हैं। तो कुछ उसका ऐसे इशू नहीं है, मतलब ऐसे ख़राब भी हो गए ना तो आप सिर्फ ऐसे फ़ोन का जो आगे वाला है वो भी चेंज कर सकते हो और वायर भी चेंज कर सकते हो। तो उसका ऐसे इशू हुआ तो आप बड़े लोग भाई, अरे काहे बड़े लोग, ये तकलीफ़ दे रहा था तो ग्रेट इंडियन सेल थी उसके लिए किया मैंने बस। नहीं तो ये बहुत महंगे है वैसे देखा जाए तो। कोबरा जी आप तो बात करो ही मत, आपके तो कितने ज़्यादा फॉलोअर्स है वो आपको 2 मिनट में रुको। कितने आपके सब्सक्राइबर्स, 1 सेकेंड आपको फॉलो करता हूँ मैं कितना। Guess we can rest a bit. कितने 708। और मोरेक्स जी आप भी बात मत करो, आपके भी बहुत है। आपके भी कितने हैं, 1 सेकेंड। दोनों भी बहुत बड़े यूट्यूबर है। देखो 548 मोरेक्स एंड कोबरा जी आपके 708। तो देखो ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ मैं बस बोल रहा हूँ कि आपके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप क्या ही मतलब गरीब 200 सब्सक्राइबर्स यार, 211 सब्सक्राइबर्स की मजाक उड़ा रहे है कि नहीं रोनिन भाई? हमारी मजाक उड़ा रहे हैं ये दोस्त, क्या ही बोले। अभी मैं बस कह रहा था कि अगर आपको कोबरा जी आप हेडफोन्स यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए मैं कह रहा था कि अगर मतलब हेडफोन से ऐसे डायरेक्ट, तो उसके लिए ये अच्छे है। पर इसका जो बेस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ऐसे कम है, थोड़ा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम है। अगर आपको You बेस should really चाहिए तो bring the आप Knights of Favonius कर with you सकते हो next अच्छा time. कौन सा भी यूज़। पर कौन सा मेल आया बे?
पर अगर आपको ऐसा गेमिंग के लिए और कंफर्टेबल चाहिए ना तो ये वाले मस्त है बहुत सच्ची। अभी तो मेरे को एकदम रिलैक्स लग रहा है। भाई ने अपनी जॉ लाइन फ्लेक्स कर दी ना भाई के 1K ऐसे हो जाएगी। ये देखो। कमीशन रिसेट झाले। कमीशन रिसेट। अच्छा 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 ओके। तो ये मेल किस बात का आ गया है? कौन सा तो भी मेल आ गया। बात तो सही है। अब एडिट बनाओ एंड शॉर्ट्स डालो लॉल। क्लेम ऑल। कुछ नहीं सिक्के मिले इजी बन के सब। वैसे बहुत सी चीज़ें एडिट करके डालनी है यार कोबरा जी, बस मेरे को एडिट ही करना नहीं आता। Guess we can rest a bit. आई गेस वो ही गया होगा। नेटलाइन का क्वेस्ट करो। क्या क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं ये? अरे यहीं पे पास में जोंगली खड़ा हो, उससे जाके बात कर। कहाँ पे? पास में ही खड़ा हुआ यार, जहाँ से एंट्री की थी। इधर झाड़ियों में तो नहीं दिख रहा। किधर गया वे? इतना लंबा चौड़ा इंसान गायब हो गया, किधर गया? हाँ ये इधर। ये अंकल से बात करनी है क्या? So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. वी नहीं है। We ये found देखो Mao in a इस tent पे at कहाँ the पे वीदा campsite बाबू? unconscious. It seems he'll be okay. Sadly, we found no trace of the other three. अरे हाँ PS कंट्रोल। Young Kun, what is? Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there. Default in that setting. cave. Laure। Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go and see how they're doing. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? इसका आवाज भी चेंज हो गया और देखो ना कैसे No problem. उसके You आजू बाजू में rescued my कैसे हो रहा men. है। I'll be happy to assist all of you in any way I can. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ajdaha. You're coming back to Liyue Harbor too, right? Not I. Merely this body. अरे ये नहीं आ रहा है बेचारा। Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of ऐसे famous दोस्तों प्लीज artisans. लाइक करो। He अगर आप too नहीं तो will be सब्सक्राइब famous in करो। time. थैंक यू। It would be a shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmiths. लाइक Curious करो। how swords and daggers are blind, लाइक करो। yet their creators सबर see so much. कबर कराइज करो। Perhaps empathy is mankind's proudest achievement after all. Ajdaha, I am no longer the Geo Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Bro Liyue holding fare back without Rex Lapis? his power since World War One. Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped Bro, not and then calling ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. रुक जा पीछे स्टोरी पे ध्यान दे। It would seem that even you have been eroded.
इसका मेरे को फाइनल फॉर्म देखने दो, That's रुक जाओ। unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. अरे बाप रे। When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? इसका डायलॉग हो गया ना। You A heart of stone is a smile heart to my nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. I wonder You chose justice, गॉडनिक को कुछ समझ but नहीं did आ not रहा है, बस forsake वो your ला kindness. वाले इमोजी थे। You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, थोड़ा रुक I जाओ, struggle to मेरे को confront देखने you, दो, रुक जाओ। let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend. वैसे कोबरा जी God of और मोरज जी, contracts. थोड़ा 2 मिनट रुको, आप I hereby लोगों से कुछ honor बात करनी our है। agreement. मैं ना स्ट्रीम ऑफ करूंगा, आप लोगों से कुछ बात करनी है, प्लीज रुक जाओ। Thank you, Ishtaha. My life is nigh on eternal. अच्छा हो गया, याद आ I गया, will आप go दोनों on से with बात the करनी है, रुक infinite जाओ। flow of time. And you, Morax, you too will live for many a day to come. You're हाँ, डिस्कॉर्ड का मैं ये If कर it is दूंगा, fated, रुक जाओ, Morax. 2 मिनट रुक जाओ बस। We will meet again. बात करनी है आपसे। नहीं, क्या हो गया, ये गया? Yes. अच्छा, Don't ये be गया, alarmed. ये He's गया, only asleep. ये गया। That was so हाँ, लिंक weird. देता हूँ, 1-2 मिनट It's रुको। like he suddenly रोनिन भाई, became another person. हाँ, एक In मिनट। fact, हाँ, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago ये लो, लिंक ले लो, remain कोबरा जी, लिंक ले लो। crystal clear in my mind. ज्वाइन करके रखो, मैं जब कहूँगा तब आप In our last tale, रुक जाओ, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Ishtaha was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes, quicker than words could tell. Lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order,
he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the four corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. बढ़िया था ना? एक नंबर। ये वो क्यों नहीं पहनता वो असैसिन्स वाला व्हाइट कलर का? 1,000 years ago, उसका अच्छा Aizdaha दिख रहा था। attacked the chasm. I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail लिंक down the लिंक length अच्छा and breadth of पर the दे तो एक mine. मिनट था मोरेक्स। Finally, I brought him down and sealed him underground. During that battle, Dragonfall was born. Aizdaha could sense वो the stone. ज्वाइन तो कर लिया? नहीं नहीं वो कह रहा है कि he wanted to नहीं use सालो it to ज्वाइन find नहीं me. हो गया वो ज्वाइन। Despite being the victor, मोरेक्स I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me, towards Leo, मोरेक्स ये towards पटकन life लिंक above ground. ज्वाइन हो पटकन। He was willing to be sealed away, 2 मिनट but के as बाद the कर दो। erosion set in, हाँ। he forgot. Even I cannot avoid it. अच्छा But अच्छा there is ठीक है something I कोबरा जी। वो understand मोरेक्स better को than चाहिए था ना most. उसके लिए। When the door opens, it is time to leave. The greater the power, रैविड जी the वेलकम बैक greater टू द the स्ट्रीम। danger erosion may bring रैविड about. जी ये जो लिंक है ना ऊपर का The डिस्कॉर्ड का millennia may वो come ज्वाइन and करके go, रखो आप। आपको भी but even a ले लो। stone may tire. खुश हो जाओ। हाँ, आ जाओ। आ गया। Personally sealing away an old friend. वेलकम। बाप रे। This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to ये pursue the डिस्कॉर्ड में right पहले path. 2 से ज्यादा लोग देखा हो ना। Perhaps this is the erosion imposed My on me self by the Cobra heavenly issue. principles. हेलो But I was a ब्रदर। god of mankind. ऐसा My identity may change. बहुत दिनों के बाद but ऐसे my eyes 2 will से bear ज्यादा लोग witness to देख the रहा हूँ ना history डिस्कॉर्ड of पे तो अच्छा लग रहा humanity. है। You still care a lot about Leo. स्क्रेबल Call खेलोगे तो it- 10 से ज्यादा लोग देख लोगे अभी। बाप रे। Part of my duty. I must thank you both. No worries. ये स्ट्रीम के बाद है ना बात करेंगे एक बात करनी है आप सबसे एक Oh? गेम के About रिगार्डिंग what? बात करनी है मतलब साथ में स्ट्रीम करेंगे एक तो उसके रिगार्डिंग एक बात करनी है। Oh yeah, Paimon nearly. Yes. So not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. वैसे रैबिट जी आपने कर दी क्या You're a god. डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर दिया You've रैबिट जी lived through thousands of years अगर of उन्होंने कर दिया ना history. रोनिन भाई तो Surely you निकाल दो experienced the incident. I cannot say. Why? हो गया। You can't even give us a thread of information? This is so important to us. ओके ओके I थैंक यू रैबिट understand. जी But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ejdah? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract and kept my silence. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. But as the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past, many secrets that lie hidden. They have been eroded by time, forgotten by the people, abandoned. But you are capable of finding them and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember.
If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path, everything has meaning. एवरीथिंग है, क्या बात है। स्ट्रीम ऑफ नहीं कर देता हूँ दोस्तों, मैं क्या कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ, मतलब आपकी
रैविड जी, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा ना, तो हम डिस्कॉर्ड पे बात कर रहे हैं, तो आप डिस्कॉर्ड पे भी आ सकते हो, बस म्यूट करो अपना आवाज़, बस सुन सकते हो हम क्या बात कर रहे हैं, नो इशू।
ठीक है ठीक है। ओके चलो हाँ बाय बाय। ओके ओके चलो भाई, ठीक है बाय बाय। ठीक गुड नाइट गुड है। नाइट। बस आप नाइट। डिस्कॉर्ड पे डेट बताओ, हम कर लेंगे स्ट्रीम, ठीक है कोबरा जी? या हाँ जब फ्री हो बता देना। हाँ हाँ ओके। ओके ओके दोस्त, बाय बाय, गुड नाइट, चलो बाय 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 बाय। बाय, गुड नाइट। थैंक यू सो मच। कहाँ थैंक यू बोला भाई, ये जेनरस बन रहा भाई। चलो बाय बाय। ओके ओके बाय चलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय। चलो रोनिन भाई, ठीक। ये गेम तो बहुत महंगी है तो नहीं कर सकते, जाने दो। हाँ अभी तो नहीं होगी। अभी तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इतनी महंगी गेम तो मैं नहीं ले सकता भाई, और उसके इतने ग्राफिक्स भी नहीं हैं तो इतने वर्थ जो हाँ 2000 की ले ले है, जोड़े मांग भी नहीं पीसी पे तो गया। इससे भी महंगी है, 500 रुपए महंगी है इससे। क्या बात कर रहे हो, मतलब यहाँ पे सस्ती है? हाँ वो पीसी से सस्ती है। 2274। हाँ उस पे 800 कुछ है। आई तुमको लूटा, और मेरे को लूट लिया स्टीम के लोगों वालों ने। मैं तो कह रहा हूँ आउटलास्ट 2 खेल लो। ये चवर साड़को नहीं वो हेलोवीन को तो करना है ना, हेलोवीन को तो करना है ना, याद है? हाँ वो तो कहा कर, था। वो तो करना है, वो तो करना है, यस। सैड भाई। आउटलास्ट 4 आ गया दोस्तों, आप 2 पे क्यों अटक गए हो? 1 कर लो फिर। 4 आ गया, 4 वो 400 फॉल आउट है, वो फॉल आउट है, आउटलास्ट नहीं है वो। अय्यो वाचलं तपक नींद में करून हो क्या? वाचलं। मैं वही देख रहा था आपको, क्या आपने देखा कि नहीं? वो क्योंकि चेयर के पीछे आता है ना, मैंने धपक से वो प्ले किया। अच्छा। जान जान ठीक है, कर लेंगे वो। अभी ये तो हो गया इशू, तो ये अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे स्ट्रीम पे, वो डायरेक्टली हम कर लेंगे साथ, ठीक है कि नहीं ओके। कोबरा जी, मोरक जी, वो साथ में कर लेंगे, नो इशू। और अगर मोरेक जी और कोबरा जी अगर आप हो तो देख लेना मल्टीप्लेयर का गेम, और अच्छे कौन से। रोनिन भाई आप भी देख लेना प्लीज, ठीक है ठीक है। एकदम ऐसे झकास गेम चाहिए अपने को, झकास। जकास। अभी तो रोब्लॉक्स चल रही है, जकास सबसे ज्यादा व्यूज को देते हैं बच्चे। नको नको नको, बच्चे देखने आते हैं। व्हॅलोरंटचं नाव घेऊ नको मोरेक्स, माझं डोक आउट होतं ते व्हॅलोरंटनी, प्लीज। माझं इतकं डोक आउट होतं ना ते व्हॅलोरंट से, मेरा इतना दिमाग खराब होता है। लोग मूड ठीक करने के लिए जाते हैं, मेरा मूड खराब होता है उससे। यही होता है। पॅल वर्ल्ड भी बहुत महंगे है वे। मी डायमंड 1 ला होतो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे को कुछ बात ही नहीं करनी दोस्त। सबसे ज्यादा लोग GTA 5 को देखते हैं, लीग ऑफ लेजेंड्स दूसरा नंबर पे अरे है, हाँ CS। GTA 5 भी कर सकते हैं, GTA 5 मोरेक्स GTA 5 करू शकतो, GTA 5 करू शकतो, GTA 5 कर सकते हैं। ये कोबरा को भी मैसेज करके रखूंगा मैं, GTA कर सकते हैं, अभी उनकी लेवल ज्यादा हो गया। माइनक्राफ्ट भी कर सकते GTA हैं। करायची का? माइनक्राफ्ट है? हाँ नहीं माइनक्राफ्ट नहीं है, माइनक्राफ्ट खरीदनी पड़ेगी ना। अच्छा। GTA करू मोरेक्स GTA करू, फुल कोलैब करो अपन, फुल कोलैब हो जाएगा, है कि नहीं मैं रोहन भाई? बताऊं? हाँ और ना सुनो, मैं कह रहा हूँ हैलोवीन पे ये जो अ क्वाइट प्लेस की नई गेम आ रखी है ना, द रोड अहेड, ये खेल लो। टी पीछे लॉन्चर, कुत्ता भौ भौ कर रहा है। हाँ अये आपको भी सुनाई दे रहा है? हाँ बाप रे। एक ये गेम बहुत चल रही है, लायर्स बार। टी लॉन्चर क्या है? टी लॉन्चर मतलब क्या? ये चैट पे देखो मोरेक्स जी क्या कह रहे हैं, टी लॉन्चर आहे ना, टी लॉन्चर ये माइनक्राफ्ट का थोड़ा वो है, इलीगल वाला लॉन्चर है। मतलब शायद से वही है। कौन सा क्या बात कर रहे हो मोरेक्स जी आप? माइनक्राफ्ट का फ्री वर्जन, ओके। हाँ वैसे बट ये नहीं खेल पाएगा ना जिन लोगों ने पेड वर्जन, जैसे मैंने पेड वर्जन ले रखा है, तो तुम और मैं साथ में थोड़ी खेल सकते हैं उसे। क्योंकि हमारे सर्वर का वैसे इशू हो आएगा। सकता है मोरेक्स जी, देखो अभी रोनिन भाई ने सपोज ने उनके पेड़ ही है,
और मैंने तो खरीदा नहीं है, तो वो साथ में हो सकते हैं कि नहीं। ये एटर्नल्स का, हाँ। ये क्या बोल रहे हैं? एटर्नल्स होता है eternals.gg, वहां पे जाके तुम माइनक्राफ्ट के सर्वर बना सकते हो। तो कह रहे सर्वर 1 से माइट भी हो सकता है हो सकता है, मतलब नॉट श्योर। शायद। नॉट हाँ। श्योर। कोई नहीं, देखो अभी 2 गेम तो फिक्स कर लेंगे। एक GTA और दूसरा वो चेन टुगेदर। और उसके बाद मे बी अगर और लोग जुड़े तो हम कर लेंगे अमंग अस की स्ट्रीम, मे बी और लोग जुड़े तो। अमंग अस अब पॉपुलर नहीं रही अमंग अस। पर उतना मजा आएगा ना दोस्त, लोगों की बट असली फिर रूप बाहर उसको आएगी। स्ट्रीम करना भी तो मुश्किल होगा। अब वैसे मैं अकेला थोड़ी करूँगा स्ट्रीम। देखो मोरक जी है, कोबरा जी है, आप भी कर लो ट्विच पे। आपकी मैं क्या छुप छुप भरोसा। के देखूंगा, छुप छुप के मैं देख लूंगा। हाँ आई आई, हाँ यही है। देखो मोरेक्स को मैसेज, इम्पोस्टर है रोनिन भाई। हाँ ऐसे कर दूंगा मैं, ठीक है। ठीक ठीक देखेंगे। चलो अभी बस कर देते हैं। भाई कुत्ते को पागल हो गया कि इतू सा कुत्ता है, छोटू सा, इतना है। भूख लगी कब से होगी चल रहा बेचारे है। को। भूखने लगी, उसको कुछ और दिख रहा है। चलो बस टेंशन का खत्म करके भी सो जाता हूँ। यस यस, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। चलो मोरक जी सो जाओ, अभी हम भी सो जाते हैं, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बाप रे, हाय इतना लेट, 2 बजे हाय। अभी सोने का टाइम है दोस्त, 2 बजे हाय। अभी बाय का टाइम है, आ गया। कल आएंगे कल। कल आ जाओ, कल आ जाओ। अभी हाय। सब्सक्राइब करके चले जाओ। हाँ एक काम करो, सब्सक्राइब करो। अरे भाई मैं अभी उठा। अच्छा अच्छा, मतलब आपकी गुड मॉर्निंग हो गई है दोस्त। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। अभी क्या ही बोल सकते, गुड मॉर्निंग दोस्त, वेलकम टू द स्ट्रीम। वैसे सब्सक्राइब करके रखो। हम कल बात करेंगे दोस्त। अभी हमारे सोने का टाइम हो गया ना। आप तो जग गए, पर हमारे सोने का टाइम हो गया। मिलते हैं आपसे कल दोस्त, अभी ठीक है। चलो टेक केयर। चलो। यस, ये भाऊ भाऊ को कुछ तो करना पड़ेगा। मेरे को इन्हें छर्री की गन ला के दो। छर्रा मालूम है, छर्रा। छर्रा है, हाँ पता है मेरे को, बट हाँ। छर्रे की जरूरत नहीं होगी, लेजर लाइट से डर जाएंगे वो। चलो बाय बाय, बाय बाय मोरेक्स जी, बाय। टेक केयर। चलो कल कल फैज़मो खेलेंगे मोरेक्स जी। कल फैज़मो। मोरेक्स जी, हेलो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, मोरेक्स जी, मोरेक्स जी, मोरेक्स जी, फैज़मो पे है क्या मोरेक्स जी? बाय बाय बोल के चले गए क्या? हेलो। एक चले गए होंगे। उनको मैसेज करो। आई देवा। डीएम कर दो ना। हाँ वही 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 वही। इधर गए, कैसे करते हो? अरे पर्सनल मैसेज जैसे मेरे को करते हो। हाँ यस, कर दिया कर दिया। ठीक है। फैज़मो को स्पेलिंग कितना मस्त था मेरा, फैज़मियो।
रुको, आ रहे हो, आ रहे। अच्छा, मोरेक्स जी तो हैंडसम है। अरे क्रूजर को भी बुला सकते हैं ना? हेलो हाँ, बुला हेलो सकते हो। हेलो हेलो। हेलो, हाँ ऐक ना, हेलो। हाँ बोलना। उद्या आहे फॅझमोझोमल, ठीक है। फॅझमोफोबिया, पेड है या फ्री? पेड पेड। पेड है। ओके, देखना पड़ेगा फिर तो। कितने की है रोनिन भाई? 1 मिनट। अभी तो ऑफर चल रही होगी ना, तो नहीं, 880 की, अभी कोई ऑफर नहीं है। आई देखो ना, सैड अगर पॉसिबल होगा तो आपको। यार, ट्राई करता हूँ बट कुछ बता नहीं सकता। ठीक है। ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। ये भी अच्छी गेम है मल्टीप्लेयर, तो वो कर सकते हैं। और कल GTA 5 करनी है क्या फिर? है आपके पास तो? यहाँ एपिक गेम्स पे है, परचेस की रखी है, लेकिन डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोडेड नहीं है अभी। तो फिर क्या कल करनी है स्ट्रीम, या मतलब देखते 2 दिन आप बाद कर सकते करते हो? हैं फिर। 2 दिन बाद ठीक है, चलेगा या चलेगा। वैसे और बताओ। उनका जो सर्वर का है वो इश्यू रहता है, तो आप गेम थोड़ा सा खेल लो। या बहुत नहीं, मैंने बोगस है खेल उनका रखी है पहले सर्वर। मेरे एक फ्रेंड के अरे नहीं साथ। नहीं, सर्वर इतका बत्थड आहे त्यांचा, इतका डोक आउट करतो तो सर्वर। रोनिन भाई, हैकर इतना वगैरह येणार बोगस ना, सर्वर आहे वो। हैकर और सो। मी गेम घेऊन 6 महिने तसंच बसलो होतो, तो गेमच चालत नव्हता। त्यांना मी मेल मेरे को पैसे दो, तो कुछ भी नहीं आ रहा उधर से। सैड भाई। तो दो दिन बाद आप मैसेज करो, हम कर लेंगे। या हाँ sure. ठीक, ओके ओके, चलो। बरं, मी काय म्हणतो, हाँ, मला एखाद्या वेळेस 4 तारखेनंतर गावाला जावं लागेल. ऐका। सो डिले होऊ शकतो. यू नो, लाईक हाँ हाँ, आय यस हॅव अ न्यू यस मॅरेज, सो आय हॅव टू यस गो. यस यस यस, गॉट रीतिरिवाज अँड ऑल. इट. स्ट्रीम चालू, थांब. ओके. हां कळालं मला, या, कळालं, काहीच विषय नाही, काहीच विषय नाही. आय हॅव टू गो. हां म्हणजे जसं ॲडजस्ट होईल ना तसं आपण करू संगती, काय टेन्शन नाही. चालेल चालेल. कारण की आहे बघ, आता तुला पण जसं सुट्टी लागेलच ना, मग आपण स्ट्रीम संगती करू शकतो. या सुट्टीचं, बरं मी काय सांगू तुला, मी प्रायव्हेट मध्ये. अरे हां, ऐक बिचारे, 2च दिवस असेल ना सुट्टी, खरं सांग. मारुती सुझुकी नेक्स्टच्या शोरूमला आहे HR म्हणून. व्हेरी गुड. सुट्टी कसली तुला काय सुट्टी आणि कसलं भाई. काय? जाऊ दे मग. नाही, जसं जसं तुला जमल ना तसं मला उद्या न्यू मेसेज कर, काहीच जॉईनर्स विषय येणार नाही. आहेत बाबा. उद्या न्यू जॉईनर्स येणार आहेत, त्यांच्या सगळ्यांची ID काढायला सांगितलंय बस मला बस बस साहेबांनी. बस बस बस, काहीच विषय नाही, काहीच विषय नाही. ऐक हे बघ, मी यूट्यूबला आहे ना, डिस्क्रिप्शनला बघ माझं इन्स्टा टाकलेलं आहे. ओके. तर हां, तिथं पण तुम्हाला मेसेज करू शकतो जर डिस्कॉर्डवर मी रिप्लाय नाही दिलात, कारण की डिस्कॉर्ड फक्त लॅपटॉपवरच आहे ना माझ्यात, तर ते PC वर मी लॅपटॉपचे घेतलेलं. स्पेक्स काय आहेत? लॅपटॉपचे आहेत, माझा आहे जो Asus ROG Strix G15 आहे. ते नाही, ग्राफिक कार्ड आणि इंटेल प्रोसेसर सांग फक्त. कोर i5 10 Gen. हा. ग्राफिक्स आहे GTX 1650 Ti. अरे इझिली माइनक्राफ्ट TL लॉन्चरवर चालून जाईल. फक्त रोनिन भाई के देखना पड़ेगा, पेड है तो माइनक्राफ्ट हाँ, रोनिन भाई का तो पेड है ना, तो उसके लिए थोड़ी देखना दिक्कत। पड़ेगा. हाँ, वो ओके कोई ना, यूट्यूब। मैं सर्वर एक काम करता हूँ, सर्वर का एड्रेस क्रिएट करके देखता हूँ. अगर दोनों एक वर्ल्ड में आ रहे हैं तो ठीक, वरना दूसरी गेम कर लेंगे. हाँ ठीक है, चलेगा ना। अभी ट्राई करके देखते हैं. GTA और चेन टुगेदर तो फिक्स हो गया। ओके. ठीक है। हाँ, और थोड़े दिन के बाद हम ये भी कर सकते हैं, अमंग अस। या हाँ, ओके, चाल. ओके चलो फिर. हाँ, संगती स्ट्रीम करू, तू तुझा टाइम सांग तसा. ओके हो हो. ओके, बाय बाय. चलो, गुड नाइट, टेक केयर. गुड नाइट. चलो रोनिन भाई, सो जाते हैं. ओके. रोनिन भाई रुको, थोड़ा Good night. 2 मिनट रुको, मैं आता स्ट्रीम बंद करके. 1 मिनट, ठीक है. हाँ हाँ.
चलो दोस्तों, इसी के साथ आज की स्ट्रीम समाप्त करते हैं। 2:13। चलो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए आप टेक केयर, पीस आउट।